हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल के खान जिब्रान खान बैठा हुआ है। हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ गए हैं इस दफा चैंपियंस लीग डिस्कस करने। कैसे हो ब्रो? यार मैं फिट यार. हाँ? How have you been? ऑलराइट, kind of alright bro. Kinda alright. हाँ यार प्रीमियर लीग की तो बाद में बात करते हैं. हाँ इसीलिए ऑलराइट। हाँ चैंपियंस लीग आ गई है ब्रो। 2-3 बड़े मजे की मैचेस है। एक बहुत बड़ा मैच है लेकिन मैं वहां से स्टार्ट नहीं कर रहा तुमसे। अच्छा. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लिवरपूल। आहा. सालाह वर्सेस स्लॉट। इंटर वर्सेस लिवरपूल भूल जाओ, इट्स सालाह वर्सेस स्लॉट। साला versus Slot versus Carragher. कैरेगर। हाँ बढ़िया. आई थिंक जैसे हम बात भी कर रहे थे और फिर भी इट्स आई डोंट थिंक देयर इज एनी. साला ने जो बात की है बिल्कुल सही किया. आई थिंक ही इज I know. I agree with his stuff. But if you look at it from the team's perspective, Would you do that? I don't know if I would do that, especially like after the results they've had. Yeah. And ठीक है, they haven't lost. They drew the 2 games with Leeds and Sunderland, and they beat West Ham since the last Champions League game. But They should have won. yeah, they should have won. But I just feel कि जैसे हमने लास्ट में भी बात की थी जो प्रीमियर लीग वाले में कि it seems like a problem between Slot and Salah. Yeah. And I think it's now Carragher has as usual कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है. Yeah. फिक्स हो कहीं ना I कहीं swear हो to गया God. है. Honestly हमारे वो दूसरा जो फ्रेंड्स वाला ग्रुप है ना जहाँ पे वलीद मसूद खान भी है एंड ऑल ऑफ दैट, Yeah. तो उस पर काफ़ी ज़्यादा लंबी डिबेट चल रही थी तो मैंने तो नहीं पढ़ी। अच्छा. लेकिन उसके बाद एक तारिक है हमारा बॉय, उसने सही बात लिखी जो कि आई एग्री विद हिम। It's like this is pure racism from Carragher's side, यार bro. I was just about to say that this is like English media racism. They yeah. cannot हजम नहीं हो रहा उनसे कि एक इजिप्शियन मुसलमान ब्राउन बंदा आके ये बातें कर। आके ये बातें कि उसके अलावा आके उसने लिवरपूल को कहाँ से कहाँ ले गया है. अच्छा, according to him, he was a failure at Chelsea. He was known as a failure at Chelsea, according to Carragher. Yeah. और फिर लिवरपूल में आया तो लिवरपूल ने बहुत कुछ दिया। लिवरपूल didn't win a Premier League title until Salah came. right? Yeah, I think Carragher से पूछना चाहिए कि तेरे कितने, I don't know how many years he played, like I think 15 years. He won the Champions League though. Yeah, but like where is his Premier League title? 7 या 8 own goal मार चुके हैं. Yeah. ठीक है. Like I just feel the way he was talking about it. Yeah, condescending. Condescending, थोड़ी सी वो जो white supremacist वाली yeah. थोड़ी सी vibes थी. और I didn't like that at all. Not at all. And I just feel for the team as well. Salah just needs to put his. If I was Salah, I think उसकी जो outburst थी वो अगर if you look at the clips as well कि Van Dijk ने थोड़ा सा करने दिया था. वो जो Van Dijk की वो clip आती है जिसमें वो कहता है कि let him talk. ठीक है. तो I just feel कि it's not only Salah who's. It's the whole. It's the whole, it's the whole dressing room. And dressing room के अलावा I just feel कि the impact it has on the overall dynamics of the team, the current situation they're in, they should have been close to City and Yeah. Arsenal. I Yeah, just yeah. feel like these are games they should have won. They've got a great squad. Yeah. It's just that they're not playing well. Yeah, and like we said, like before as well, कि इनकी 11 क्या है? Salah कहाँ fit होता है? Slot की गलती हुई ना ये। Yeah, I agree. And what Salah said was basically कि मुझे क्यों निकाला? ठीक है. उसने बेसिकली यही कहा, मुझे क्यों निकाला. That's a real sense. ठीक है. हाँ, ठीक है. उसने कहा मुझे क्यों निकाला. तो I get his point. Yeah. I get his point of view कि he's done everything for the club and like he gave a good example कि like Harry Kane. Yeah. हैरी केन गोल नहीं मारता तो क्या आप उसे बेंच कर दो? क्या उसकी गलती बनती है? क्या इज इट जस्ट हिज फॉल्ट? Is the it not system's just fault. like, and Liverpool, it's not as if Liverpool have not been scoring goals. ठीक है. They have, I say कि okay, the caveat is that they've been doing it without Salah, but again they still have been scoring goals. They've just been conceding a lot. Conceding a lot. Yeah, and I just don't understand like I just feel Slot is in a tough position. Yes. और अभी जैसे हम बाद में भी बात करेंगे कि वो जेबी अलोंसो के साथ भी उसके साथ भी उन्होंने प्रेशर डाल दी है. Yeah. It could be like अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो कोई ना कहीं मुझे लग रहा है कि Alonso there and maybe Zizou or someone else comes in as Real Madrid or I don't understand Slot's like dynamics. Where does Slot go though? Where does Slot go? घर जाएगा और कहाँ जाएगा भाई? घर जाएगा, चिल मारेगा. Maybe Klopp comes into Madrid, but like we said before, Klopp said he only wants to go to Liverpool, but you never know. And this is where I just feel that as much as a great team you have,
you need to be able to control your players, Yeah. and you need to be able to pick your best 11 every single time. And He you need hasn't to, been able to do he that. hasn't been able to do that at all. And I don't know. I just feel like, you know, like Ekitike goals मारा है, Yeah. लेकिन वो अब injured हो गया है. Yeah. Gakpo, आपका favorite player? मेरा फेवरेट प्लेयर नहीं है यार. मतलब ये लिवरपूल फैंस का भी काफी ज्यादा कहना है, और मैं भी जब देखता हूँ लिवरपूल की गेम्स, आई नेवर अंडरस्टैंड कि सारे जो इतने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल Yeah. हैं, you've got Isaac, you've got Ekitike, you've got Salah, you've got Chiesa, you've got Wirtz, Yeah. and the one constant in that attack is Cody Gakpo. He scored some crucial goals, लेकिन Yeah. overall gameplay जो है ना, I feel the left hand side with Kirkes bombing forward, वो वाली half space भी लेता है, and I don't think he's just that good enough. Off the bench, great option. Yeah. Could play some matches, लेकिन cannot be a short starter, right? Yeah, but I just feel that the way he's been performing in the last few matches, maybe that's the reason why he's stuck with him. Like वो एक होता है form की वजह से. Performing, हाँ ठीक है, I'll agree to that in a certain way कि he's been scoring some goals. Yeah. Performance अगर isolate करके देखो ना, it's not been that good. I think they could make a better team with him out of the team. Yeah, and I think right now वो उनका एम यही है कि साला के बगैर वो बेहतर टीम बनाए. Yeah. और वो साला ने अभी इंस्टाग्राम पे भी वो एक पोस्ट मारा था कि सोशल मीडिया पे कि he's in the gym, he's at the training grounds in the gym. So I don't know, and the way he's worded कि I've called all my family, Yeah. my friends, my parents कि ब्राइटन के खिलाफ मेरा Even if I don't play. even if I don't play, I will enjoy the moment. I don't know. I don't think Salah has lost it. Like in the sense that if I was any other team needing a player, I would. If Salah's available, why not? A cheeky 2 million bid from Chelsea. 2 million is इसके जरा एक दो और 20 zero add कर लो. 20 million. Yeah, 20 million. But I भी don't कम think है. Chelsea needs a winger. If you वैसे look ही at, मैं कह but रहा I'm just saying कि like a team like any team. Maybe I think Salah's now focus is probably Saudi. Yeah. I think it's a payday for him. It's a big like Yeah. हाँ. इस तरह के players उसकी age he's I think 30 plus if I'm not Yeah, mistaken. yeah. Yeah, so these guys are looking for, and he has to remain fit to He be is able fit, to. bro. He's He is fit fit, यार. हाँ. मतलब उसकी आप physical fitness उसकी बहुत है यार. हाँ, उसकी. और अभी आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसमें भी उसने लीड करना है इजिप्ट Yeah. को. So he needs those minutes under his belt as well. Yeah, he needs those minutes. He needs to start playing football. Yeah. Basically, he needs to start, and I think that's what his main complaint was. कि like एक तो मुझे क्यों निकाला और फिर मुझे खेलने क्यों नहीं देते. Yeah. Like मेरी क्या गलती है कि मैं क्यों सिंगल आउट हो रहा हूँ. Yeah. And I agree with him. Yeah. You know, if anybody should be the entire defense should be saying like Yeah. you know highlighted कि यार ये क्या कर Horrible. रहे हैं. तो it's just it doesn't make sense to me, and I don't understand what Slot will do. He said he came in his post match pre-match for Inter Liverpool wala press conference, and the whole conversation and everything was revolved around this whole speech he gave or this Yeah. press conference he gave. So I just feel कि even in that he said कि like जब उससे पूछा गया था कि do you think Salah will play again, he said I don't know. I don't know. Yeah. You know the fact that he said I don't know, like if You're the bloody manager. yeah, bro. you're the bloody manager, just say yes or no. मतलब he's left. ठीक है, I understand कि एक इनकी egos, players की egos होती है, and then managers की भी ego है. Obviously. जैसे वो एक टीचर स्टूडेंट वाला एक हाँ. होता है, you cannot, आप टीचर से बड़े नहीं हो सकते. हाँ. ठीक है, मतलब you have to. जितना भी गंदा टीचर हो, आप उससे बड़े तो नहीं हो. हाँ, जितना भी गंदा हो, अच्छा हो, बुरा हो, जितना भी एक्सेप्शनल स्टूडेंट भी हो, हाँ. मतलब टीचर या एक जो एक हाँ, आपका हाँ. हेड होता है, Yeah, it's his final decision. Yeah. And I just feel that I think he hasn't handled it well. Liverpool as a Not at club all, has not not handled at it all. well. And it could have been handled a lot better. Do you think this is the end of the line for Salah at Liverpool? Yeah, personally speaking, I think if he doesn't leave in January, then I don't think so. I think he'll play, but I think he's going to push for a move. If he doesn't start against Brighton, he's not going. Like Inter में तो है ही नहीं, Inter squad में में तो squad में नहीं है. squad में हाँ, नहीं तो है. वो ये तो तो चलो disciplinary punishment punishment आ गई, completely understand. अब पता नहीं ब्राइटन पे वो होगा स्क्वाड में, खेलेगा या नहीं खेलेगा. Squad में तो डालेगा. Are you sure about that? Yeah, I I think- can't say anything नहीं, for sure. I don't know. I don't know. Yeah. नहीं, I think squad में डालेगा, लेकिन मेरे ख्याल में start करता है नहीं करता. He's that- too good a player to leave. Yeah, out, exactly. And even against team like Inter, where you know they, Man. You needed Salah, yeah, you needed especially Salah. with Ekitike injured. Yeah, Ekitike injured. आप क्या खिलाओगे? किस तरह Gakpo भी injured ही है. तो like, Are you sure वो injured है? हाँ, कह तो रहेंगे injured है. ठीक है. लेकिन I don't know. I just feel it's a very difficult position to be in for Liverpool, for like
itne highs in the last like 5-6 Yeah. years. Okay, To एकदम. come down crashing like this, and it's not as if the dip has come. मतलब it's not a dip. I wouldn't even consider it like ठीक है उसने गोल नहीं मारे. क्रैश था लेकिन- सलाह की बात हाँ साला की बात कर. Even चलो लिवरपूल ओवरऑल उनका एक क्रैश तो आया, but क्रैश है वो लेकिन individually you cannot pinpoint being like It oh wasn't- साला की हाँ, गलती. it wasn't Salah's fault. हाँ, it's not, हाँ. but they're pinning it on him. Yeah. That is what I don't understand, and what I agree with, like what Tariq also said कि ये racism, Racism है bro. pure racism है, हाँ. pure racism है और बहुत गलत बात है. और I think, do you think he's gonna leave? What's your take on this? I think he's gonna leave In January or in Jan. He's gonna be pushing for it. Yeah. अगर तो कोई डील ना बनी तो फिर he might be reintegrated into the squad. Yeah. लेकिन I think he's gonna push for it. जाया मैं अगर सलाह होता ना इस टाइम पे मैं कहता यार जाने दो मुझे. I'll play in Saudi. I'll earn a good paycheck. I'll play regular football. I'll take my country to the World Cup. Yeah. That should be his aim right now. Yeah, and I think it's really dependent on his performance in the AFCON as well. Yeah. वो कैसे खेलता है, कैसे करता है. If he's able to take Egypt to a good finishing position, either they win it or finals or the knockout phase, Semis, yeah. and he performs in those, Yeah. I think clubs will come after him. I'm for sure. Clubs, regardless, should come after Mo Salah. Yeah. Yeah, but then you want first Liverpool to say, "Acha, yaar, he's up for sale" before you make the bids. ताकि Or वो- just Salah to say I'm up for sale. yeah, वो again वही बात है कि club बोला. It's just I won't say it's the Ronaldo Ten Hag वाला issue. It's something similar to that, It is. where basically Slot is saying that the player is not bigger than the club, and Carragher भाई तो I think he needs to Shut up. yeah. Yeah. Exactly. हाँ, He he needs should to shut up. Yeah. कैरिगर से पंगे ले रहे हैं हम यहाँ पे बैठे हुए. अच्छा इंटर के साथ मैच है उनका. Yes. इंटर भी अनबीटन इन द लास्ट मैच. Yeah. अनबीटन क्या कह रहा हूँ मैं. They won the last They match. won the last match. कुओमो को उन्होंने Yeah. 4-0 मारा. 4-0 मारा था और Yeah. वो भी कोमो का I think 12 या 13 मैच unbeaten run था. Cesc Fabregas is on a run. Bro. Yeah, he's on a run, and Inter has been playing good. I just feel where Inter lacks right now is their right back position. वहाँ पे injuries हैं. उनके हाँ डमफ्रीज और वो जो उनका डार्मियान है दोनों इंजर्ड हो गए हैं तो I don't know who's going to play there. Again Liverpool का भी I don't know who's going to play in the attack. It's going to be a good match though. It will be a good match. I don't think- it will be a good match. हाँ, I and- don't think end to end होगा लेकिन there will be a lot of chances for both teams. Liverpool की defense is not that good. Yeah. And Inter as in Liverpool का attack तो अच्छा ही है ना फिर. They'll Yeah. attack, they'll concede. Yeah. It'll be a fun game. It will be a fun game, and I think last time they met, if I'm not mistaken, I think Liverpool won 2-1. वो aggregate वाला score होता था. They won 2-0 at San Siro. So they knocked them out, and that's the last I think in 2022. So Yeah, 3 years. yeah, 3 years. So, but I just feel Liverpool. I don't know. I think I don't have a good feeling. I don't have a good feeling. I think Yeah. Inter has been very good. They've been Inter's really, been very good in Serie A as well. So In Champions League, what, the fourth, right? fourth. Yeah, Yeah, that's great. Inter's fourth and Liverpool's 13th right now. खैर वो इतना उनका वो जो Chelsea Gap, onwards वाले सारे 10 पे ही हैं. तो Gap इतना नहीं है. हाँ गैप इतना नहीं है लेकिन Inter's match To lose. to lose in my opinion. Yeah, same. Yeah, and I think Liverpool, if they pull off a victory here, I think that will cement Salah leaving. I think so. Yeah, because then that will just prove हाँ, कि कि हमें जरूरत ही नहीं है इसकी. तो और फिर Could be a mistake. Could be a blessing in disguise. We कुछ never भी know. हो सकता. हाँ but देखना पड़ेगा क्या बनता I है. guess we'll never know. I guess we'll never know. Prediction? Your prediction, I think Inter's going to win. I think it'll be maybe I think it'll be a 3-1 Inter victory. I'm going to say 2-0. 2-0. Inter. You don't think Liverpool's going to score? नहीं. Not with Ekitike injured, not with Chalo Gakpo injured. That's a good thing. Not with Salah in the squad. I don't think they've got a goal in them You don't think against so? this Inter side. Do you think? How many goals have they conceded? Inter haven't conceded much, have they? Yeah, I don't think so. But do you feel कि like Liverpool squad rotation करेगी? I don't किस think. level bro, की they're करेगी? 13. They need a win. Yeah, but they The also whole need. club needs a win. Yeah, but they also need a win in the Premier League. Yeah. So So Inter have conceded only 3 goals. yeah. 3 गोल कंसीड किए हैं पूरे सीजन और लिवरपूल ने 10 मारे हैं सिर्फ 8 कंसीड किए. अगर Concede वही मैं कह रहा हूँ. Concede हाँ. तो करेंगे लेकिन मेरे ख्याल में Liverpool have a goal in them. might I don't know मैं 2-0 दिए. अच्छा. हाँ. मैं हमें 3-1 I think. अगर सलाह होता ना यहाँ पे मैंने कह देना था जीत जाएगी लिवरपूल. मजाक कर रहा हूँ लिवरपूल फैंस. अच्छा. Okay, so 3-1 for you, 2-0 for me. Yeah.
आज हैं फिर बड़े वाले मैच पे, बड़े बिग बॉयज पे बिग बॉयज पे आ जाते हैं। ये तो दो छोटे क्लब्स लेना। Madrid versus City, bro. You know it. Yes, sir. That's going to be entertaining match. मैं तुम्हें न्यूज़ सुनी है कि एम्बापे नहीं है। Yes, मुश्किल नहीं, I would try to correct myself. In doubt. In doubt है। जी जी। और सुना उसने अपनी उंगली फ्रैक्चर कर दी थी, and then he still played 90 minutes. on the But he broken finger. didn't train. He didn't अभी। train at all, हाँ। and I think that's a big sign when players don't train. It could be, I think, according to different newspapers and Marca. उन्होंने तो कहा कि पहले उन्होंने लिखा कि Xabi Alonso का आखिरी मैच he has to win. ठीक है? वो हार गया। फिर उन्होंने लिखा नहीं, ये जो लिवरपूल, ये जो सिटी के खिलाफ, ठीक है, चैंपियंस लीग। फिर उन्होंने मेरे ख्याल में आज के दिन में लिखा कि ये तो फारिग है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में ये रहता नहीं है, regardless of the result. And I think Madrid is in a really, really tough position. Yeah. They have no defenders. If you look at the injury list, if I go through it, I think it's Huijsen, Camavinga, Militao, Alaba, Trent, Mendy, Carvajal. अब डिफेंस में राइट बैक कौन खेलेगा? वेलवर्डे मोस्ट लाइकली। ठीक है, उन्होंने वो एक खिलाया था, वो करेरास जो है लेफ्ट बैक, वो नहीं, वो सेंटर बैक खेला था, रेड कार्ड मिल गया। सेल्टा वीगो से 2-0 हारे हैं एट होम। यू नो, इट्स writings on the wall. Mbappe has been on fire. Oof. No doubt about it. I think he scored 9 goals in the Champions League this year. And he scored, I don't know, 20 something plus overall. कितने goals मारे total? 24. Yeah. Goals this season already for Kylian. Yeah. But I don't think he's, like, if he's not there, Vinicius में इतना वो fire power नहीं रहा जो पहले Vinicius था last season वाला। Vinicius के भी आ रहे थे rumors कि चला जाएगा ये वो। यार यही तो मसला होता है ना, ये जब आप too many superstars type in one club, then you need a cleaner version बोल दिया, मैं कुछ और बोलने लगा। ठीक है, superstars पे stick करते, ठीक है। too many superstars, yes. Yeah. तो I just feel कि like वो भी Xabi Alonso को push कर रहा है, क्योंकि I think he got benched couple of times as well. तो it's going to be a tough one. Last time I think like City lost to Leverkusen, but that's also because they benched everyone. They benched almost their entire team. So that बनता था। Madrid भी बड़े narrowly जीती थी Olympiacos। हाँ, I think 5-4 था। 5-4 था, 4-3 था। 4-3. They were leading what 4-1 और इस तरह का कुछ, फिर उन्होंने दो गोल मारे थे। I don't know, man. I don't know. It's even if you look at after the Leverkusen game, City's won 3 back-to-back games. Yeah. ठीक है, in the Premier League. Yeah. And Madrid's, I think, won only one and I think lost. Yeah. And the last match, you know, it's just the run in, you know, into these kind of matches, these big matches. Like we said with Liverpool as well. Like, you know, you need some sort of momentum. Madrid does not have any momentum. Yeah. I feel it's going to be really tough. रूडिगर के साथ वो कौन खेलता है सेंटर बैक, लेफ्ट बैक कौन खेलेगा, मसलूसेस पड़ गए हैं बहुत बहुत ज़्यादा। और इट्स आई डोंट नो, आई थिंक, बट इफ यू लुक एट द हेड टू हेड, Madrid has an upper hand, and if you look at overall Champions League, I think they've 3 out of the 4 winners are these two clubs. 2 Madrid, 1 City, और फिर PSG last year जीता है। तो it's a ये इनका आई थिंक 5th कंसेक्टिव ये मैच का भी। तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ थोड़ी सी मुझे लगता है, कोई वो जैसे ड्रॉज नहीं होते उसमें वो कहते हैं यार इनको तो खिलाओ ना आपस में, व्हिच इज गुड। आई थिंक द फर्स्ट टाइम दे प्लेइंग इन द लीग स्टेजेस। सो सॉरी, बात याद आ गई, मैं तुम्हारी बात काट रहा हूं। तो डिड यू सी दैट फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉज वाली पूरी सेरेमनी? व्हाट अ हॉरेंडस, व्हाट अ शिट शो मैन। आई डोंट नो व्हाट दे गोना डू। ट्रम्प को भी पता नहीं क्या मेडल शेडल दे रहे हैं। और ट्रम्प वैसे नेचुरली बड़ा फनी आदमी है। ट्रम्प तो यार मीम चलता फिरता मीम है। He was too funny that या वो जॉनी से कह रहा था जियानी उससे बेचारी का नाम ही। But I again, like, you know, they're trying to promote the game in America. If we come to the World Cup, like, I don't know, yeah, it's World Cup की बात World Cup में करेंगे। Mind blowing था। लेकिन वो खैर, coming back to this, I think it's City's game to lose. I think it's gonna be I feel Pep, एक तो ये है कि प्रीमियर लीग में उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है आर्सेनल पे, ठीक है, मोमेंटम इज विद देम, दे ऑल द अदर प्लेयर्स हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग, Foden has performing, Cherky has played a wonder game, that assist, क्या रबोना मारा भाई ने।
And I just feel defensively they're getting back into that strong. Ruben Diaz वापस आ गए. वो Ruben सारे Diaz, Guardiol, yeah. partnership. Nico Riley's playing pretty good. Yeah. And he's been consistent as well in And the team. Matheus Nunes has been really good. Yeah, right so, back, so they've been playing quite consistently with the same 11. And which is unlike Pep. Which is unlike Pep, but I just feel like he did in the Champions League. उसने वो तो bench कर रहा था just to give them a lesson ना. वो जो वो हारे थे I think तो वो I just feel now he's definitely going to play his first 11. Obviously Madrid. And Madrid के खिलाफ वैसे ही उसका वेंडेटा होता है. हाँ. उन्होंने उनको नॉकआउट इतनी बार कर चुके हैं. और फिर बार्सा का था ये. था ही है. हाँ. तो मुझे लग रहा है City, I think City will be if I would say I think it's going to be a goal fest. ठीक है, regardless. मुझे लग रहा है कि सिटी क्योंकि गोल भी खा रही है आजकल, तो मुझे लग रहा है कि सिटी जीतेगी कोई यही इसी तरह स्कोर 3-1, 4-1. 4-1. I'm going to say 3-2 City. 3-2 सिटी. हाँ. यार एम्बापे के बगैर अगर एम्बापे स्टार्ट करते हैं फिर तो आई थिंक इट्स गोना बी रियली रियली कंपेटिटिव. I still एम्बापे feel के बगैर यार उनमें तो I still feel Madrid has that European pedigree to come up with clutch goals, but they'll lose this match. They'll That's lose what this. I feel. Do you think then Xabi Alonso's out? Might be. Salah तो शायद दुआ ही कर रहा हो. I think I don't know कि उसे अभी निकालेंगे या नहीं, लेकिन I think City is going to win. तुम्हें नहीं लगता निकालेंगे? पता नहीं मुझे. Chances तो मेरे ख्याल में इसको जनवरी में काट देंगे. एक सीजन दे दो, मैं तो कहूँगा. हाँ लेकिन ये थोड़ी रूथलेस है ना. है तो सही. थोड़ी रूथलेस है. ये और चैंपियंस लीग में भी अब I don't know. I that's we'll see how it happens. But I think City's going to win this one. हाँ मैंने भी यही बोला. So you said 3-1 or 4-1. I said 3-2. Yeah, City. अच्छा आगे किस पे जाने? चेल्सी पे आ जाए. चेल्सी पे आ जाए. चेल्सी वर्सेस एटलांटा. क्या सीन है भाई? यार चेल्सी बोर्नमथ के खिलाफ अगर आप लास्ट मैच पे जाओ, अगर हम प्रीमियर लीग लास्ट कंपेटिटिव मैच पे जाएं तो दे प्लेड प्रीटी बैड. दे प्लेड प्रीटी पोरली. दे गॉट डिलैप इंजर हो गया था. ठीक है, बोरिंग मैच था. काफी बोरिंग था. काफी मतलब आई थिंक बोर्नमथ शुड हैव वन टू बी क्वाइट ऑनेस्ट. बट इफ यू लुक एट द वे दे प्लेड अगेंस्ट बार्सा इन द चैंपियंस लीग, तो आई थिंक Maresca will want that same sort of momentum and that same sort of performance against the way they played it. I guess वो एक red card का एक फायदा था, मतलब benefit होता है चेल्सी को कि वो they perform well against Barca. But Atlanta has been playing pretty decent. दोनों टीमों ने लास्ट मैच में 3-0 मारा है. एक ने बार्सा को, दूसरे ने फ्रैंकफर्ट को. तो it'll be good. I think they're on same points as well. I think 10 points पे हैं दोनों. Chelsea at home है, Chelsea away है. Chelsea at home है. Are you sure? No, I think it's away. Away. हाँ. And Atlanta has been very good at home. हाँ, मैं यही कहने लगा था. और उनका मैनेजर पता है अभी रिसेंटली इनका मैनेजर भी बदला है. हाँ. और वो जो मैनेजर है ना, उसने वो जो इनका जो स्टार परफॉर्मर था वो एडमोला लुकमन जो है, उसने उसको वापस टीम में लेकर आया. Yes sir. वो he has been playing a lot better now. I just feel के I just feel again like if you look at overall team on paper, दोनों टीमों पेपर पे देखो तो Chelsea is better. Obviously. But if you look at the way momentum is going, Atlanta has been playing pretty good. They have been quite, I think they've been, and I think it's going to be a draw. I think Chelsea will nick it. You think so? Yeah. I think just nick it 2-1. क्योंकि I think maybe because देखो Atlanta ने last match में वो they didn't play their first 11. ये जो अभी सीरिया में मैच हुआ है. और क्या रिजल्ट क्या था उधर? यार I think they lost to Hellas Verona. Yeah, they lost to a pretty poor team, and that team had not won I think in 14 games. Damn. Yeah, so that's why I feel that this match he's going to play his strong team, and might be like a 2-2 draw type vibes. Bro, Zappa Costa वापस आ रहा है. Zappa Costa Chelsea को फेस करना. यार उसने हमने 1 सीजन खेला है, 2 सीजन 1.5 सीजन खेला है अच्छा. वैसे अटलांटा के लिए बहुत अच्छा प्लेयर है. विंग बैक. एज अ विंग बैक अच्छा है और क्रॉसेस बहुत मारता है. हाँ, वो तो मारता था मुझे. तो और वो जब आया भी था इसी वजह से आया था कि हमें क्रॉसिंग वाला बहुत चाहिए था. तो आई जस्ट फील कि like Lukman is the player that is the main dude who's gonna probably do something
against Chelsea. Scamacca भी है इनके पास हाँ, स्ट्राइकर. yeah. West Ham में भी खेला था Yeah, Scamacca, but I हाँ. think he's injured if I'm not mistaken. No, He's actually I injured. think नहीं, he's he playing. played in the he's last playing. match. Yeah, so let's see क्या बनता है. I think I'm gonna say a draw. I'm going to say 2-1 Chelsea. चलो मेहरबानी आपकी. I hope यार मैं अनबायस्ड होके देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना. अच्छा चलो फिर मेरे क्लब पे आ जाते हैं जहाँ पे Sir. थोड़ी सी बायसनेस आ जाएगी. क्लब ब्रूखा को फेस करिए आर्सेनल अवे. Arsenal have already qualified for the knockout round. Yeah, अभी. they're the only unbeaten हाँ. team. They've qualified लेकिन obviously first spot nailed down नहीं हुआ. I think Arteta will rest a few key players for this one. Ben, I think after Villa's performance and Yeah. the way they conceded the last minute goal as well, I think he's going to put all focus now on the Premier League. He He should. knows, like not I would say not for the whole season, but I just feel right now his main focus will be until the knockout stage. until the knockout हाँ. stages start. I think it's going to be that. Arsenal, I think it has a defensive issue problem again, rather in the sense of their players who are they I going to think play. Saliba's back in the squad. That for- is, I for think that's Club going to be a Brugge. big bonus. yeah. But will he start? I don't think he you would should. risk. I Why don't would you think, risk हाँ. it against a team like that? हाँ, you I should. think Club Bruges है, Club Brugge. Brugge, Bruges, एक ही बात है. हाँ, मतलब वो कुछ 26 वो 26th है हाँ. in the Champions League. Yeah. ठीक है, वो मतलब वो playoff position में भी नहीं है अभी. लेकिन knowing Arsenal and the PTSD all the Arsenal fans Yeah. have, वो इस तरह के मैचेस हार जाते होते. हाँ, और तुम्हें पता होना चाहिए कि क्लब ब्रूजा ने ब्रूजे ने हाँ, जो भी. हाँ, जो क्लब है बेल्जियम वाली टीम जो है, उन्होंने 3-0 पहला मैच स्पोर्टिंग से और फिर yeah. उन्होंने 3-3 बारसा के साथ भी ड्रॉ किया था. Yeah. सो इट कुड बी, बट आई डोंट सी इट हैपनिंग. आई थिंक आर्सेनल्स गोना They might make it. सलीबा को ना खिलाएं. सलीबा नहीं खेलना चाहिए. I think राइस और साका को भी रेस्ट हो इस मैच में. राइस deserves a rest. Arteta. या प्ले नॉरगार्ड ब्रदर. मुझे एक सेकेंड, चलो वो प्रीमियर लीग वाले पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ये पॉइंट फिर से मारना चाहूंगा. अब पहले बाद में फिर से हो जाएगा. जब लिया है नॉरगार्ड तो डालो ना जब आपके राइस और जुबेमेंडी थक चुके हैं. हाँ. आई थिंक दैट वाज ऑन आर्टेटा. सलीबा को ना स्टार्ट करें. कैलिफ्यूरी इज आउट बाय द वे Yeah. दिस वन फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड. या ही इज गॉट अ बिट ऑफ अ. मुझे लगता है थोड़ा मिक्सचर सी टीम होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं जाएगा ये. हाँ, लेकिन फिर भी आई थिंक दे स्टिल हैव इनफ टैलेंट. हाँ दे डू. मैडुएकी शैडुएकी खेल लेंगे. Madueke, Martinelli, Gyökeres को start करवाओ. Yeah, हाँ. start him. Yeah. Then in midfield you can start with maybe Zubimendi, Norgard, and maybe Odegaard. Odegaard और Eze में Eze, से. yeah, And पीछे आ जाएगा आपका टिम्बर, वाइट, yeah. नहीं, तो वो Hincapie और लुइस केली. Yeah, I think something like that. हाँ, ठीक And it'll be interesting to see कि वो खिलाता क्या, लेकिन मेरे ख्याल में अब उसका फोकस प्रीमियर लीग पे है. होना भी चाहिए. And Predictions. Arsenal will nick it like 2-1. I'm gonna say 3-1 Arsenal. 3-1. हाँ. ये बायसनेस आ गई. यार ये क्या बात. 2-1 तूने बोला. भाई मैंने कहा एक तू और खुद गोल कह रहा मारेंगे. साका को ड्रॉप करो, राइस को ड्रॉप करो, गोल कौन मारेगा यार? ये दोनों ही तो नहीं मारते ना. और कौन मार? ग्योकेरेस का ब्रेस हार है. चल. You never know. You never know. You never know. I don't know. एमी बोले. Don't hold me to this. अच्छा भाई, फिर आ जाने बारसा वर्सेस फ्रैंकफर्ट पे. Yeah. हाँ जी. यार Barca has been on fire ever since they lost to Chelsea 3-0 in La Liga. They've won their last match against, I think it was Betis tha, I Real think. Betis, yeah. Ferran Torres has been on fire. He scored a hat-trick. अजीब सा प्लेयर है bro. अजीब सा प्लेयर है, लेकिन यार इफेक्टिव है. और वो अब लेवेंडोव्स्की पे भी प्रेशर डाल रहा है कि यार मुझे ड्रॉप करके दिखाओ. हाँ, मुझे ड्रॉप करके दिखाओ. Is he the Cody Gakpo? Yeah. Barca. नहीं, he's much better than him. He's very technically gifted player. Like all these Spanish usually players are. But I just feel कि he lacks that, वो जो एक होता है ना, वो एक presence होती है, strength वाली, वो जो dominating. But again, Barca doesn't play that way. And Barca, I think they've been playing pretty good. They're top of the league in. Atletico को भी मारा था इन्होंने. Yeah, Atletico को भी हराया था. Yeah. So it's Barca's match to lose, obviously. और And फ्रैंकफर्ट तो बेचारे बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं. 6-0 लाइप्जिग से हारे हैं वीकेंड पे. और इसमें भी 28th पे हैं चैंपियंस लीग में. हाँ. बारसा जो है, they need to win their 18th, and I think they'll win it easily. Yeah, I think so. They'll win it easily. They're at home, I think, as well. So I think they'll win it quite easily. And they just don't have Danny Olmo and the guy who got
अरेहो जो है जो सस्पेंड वो जो रेड कार्ड मिला था चेल्सी के खिलाफ, तो दैट्स इट. बट फ्रैंकफर्ट डजंट हैव द स्ट्राइकर. Michy Batshuayi. बैटमैन नहीं है उनके Yes, पास, sir. तो I didn't know he was playing at Yeah. Frankfurt, by the way. वो मैंने भी देखा, मैंने कहा यार ये तो इधर ही खेल रहा है. One of those players जो One of मैं those. भूल चुका था. हाँ, but it's interesting fact ये है कि last time these two played together, Frankfurt won, and this is the Europa League. Yes. And they won the Europa League. Yeah, they So went on to- you never know, fortune उनके change हो जाए, but I don't think so. This is gonna happen. I think it's gonna be easy stroll in the park for them. I think like a 4-0. like a 3-0, 4-0. 5 भी हो सकता है. हाँ, मुझे लग रहा है बहुत Easy. बहुत गोल फेस्ट होने वाला है. And Barca do need to win. 18th पे हैं वो. They need to get. Yeah, they need to win. They need to win. They need to win. So you think he's going to play a strong team, Yamal and Normal team. Yeah, Lewandowski and maybe Varane on the. Yeah. अपनी starting 11 जो होती है उसकी. Yeah. Given के राहो नहीं है तो जो भी fill in करता है उसकी जगह. हाँ, but I think it's easy. Easy. Smooth sailing. हाँ. Bayern versus Sporting, bro. Yes. Bayern Munich. पहले भी पूछा था, अभी भी फिर पूछ लेते हैं. Still the favorites for the Champions League in your opinion? I think it's between, depending on how Madrid plays and what Madrid, you can never rule out Madrid. I think you cannot rule out 4 teams in my opinion. I think City's definitely one of them. Arsenal is definitely one of the. I think Arsenal. I don't think they're winning the Champions League though. Yeah, I still feel that they are like up there. If you ask me, like who are the top 3 contenders, I would say City. No, I would say the way maybe things are going, City, Madrid, Arsenal, Bayern. These 4 teams. इनमें से कोई मुझे लग रहा है कि जीतेगा. और Bayern यार हैरी केन गोल फेस्ट है यार, वो भाई गोल ही मारता जाता है. और उन्होंने आई थिंक अभी हैट्रिक भी मारे स्टुटगार्ट के खिलाफ. यार वो बंदा क्या प्लेयर है यार. What a player. Is he the best striker in the world right now? I think Erling Haaland is. I think he's close to second. Yeah, for sure. Second, easily second. भूल गया Haaland को. यार कैसे भूल सकते हैं रोबोट. वो बंदा नहीं है, इंसान नहीं है, वो रोबोट कंसीडर करते हैं. हाँ, वो AI में वो फर्स्ट है, लेकिन yeah, he's right up there. Yeah, Harry Kane and I just feel the way the team has been playing, the only thing they're missing I think is Luis Diaz. He still has that red card. वो suspension अभी भी serve करेगा. ठीक है, नहीं चाहिए इस मैच में. हाँ, and इस मैच में नहीं चाहिए. और Sporting is not. Although Sporting gives no walkover. Yeah, man. Sporting is not that bad. Man. Yeah, they could. It's been pretty okay. Who's managing them though? Yeah, I don't know the guy's name, but they drew with 1-1 in their last match, Sporting. Benfica के against. And I just feel, again, momentum की सारी बात है. 6 गोल उन्होंने लाइव उनको स्टुटगार्ट को ठोका है. तो मुझे लग रहा है easy Bayern win. Like a 2-0, 2-3-0. 3-3. They might. लेकिन यार इस हफ्ते ना इस चैंपियंस लीग गेम वीक में मुझे काफी ज्यादा मैचेस ऐसे लग रहे हैं कि दे कैन गो आइदर वे. यू नो व्हाट आई मीन, लाइक बहुत ज्यादा टॉपसी टर्वी वाला सीन है. ये कितने मैच अनबीटन है वैसे स्पोर्टिंग? एक से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 मैच अनबीटन स्ट्रीक. The last time they lost was in October against Napoli. Yeah, and I think Arsenal ने Bayern का रोका है ना. Unbeaten streak. So they've scored goals, bro. Yeah, that's what I'm saying. It will be a goal fest, but मुझे 2-0 बोल के तूने goal fest बोल. 3-0 कहा था. 2 या 3-0 कहा था. उनको भी एक गोल दे देता ना तो फिर गोल. चल दे देते हैं एक गोल, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में नहीं मारेंगे. नहीं, मुझे लगता है मार लेंगे एक. तुम्हें लगता है? हाँ, मुझे लगता है 3-1 Bayern. I still feel Bayern is too clinical. They are too good. But Sporting isn't a walkover, bro. They're decent. A good. They're decent. Good mid-table Champions League team. Yeah. अच्छा, स्पर्स वर्सेस स्लाविया तुमने यहाँ पे लिखा हुआ है. फिर मैं पूछने लगा ये करना है हमने. कर लेते हैं. हमारे स्पर्स फैंस हैं यार. दो स्पर्स फैंस हैं. उनके लिए कर लेते हैं. चल बेचारों के लिए. नैद और दानियाल ये तुम्हारे लिए. दानियाल स्पेशली तेरे लिए. स्पर्स इज गोना विन. हाँ, स्लाविया के अगेंस्ट है यार. वो दोबारा नॉर्थ लंदन आ रहे हैं, दोबारा गोल खाने के लिए आ रहे हैं बेचारे. Oh यार, they're but again poor run of form for Spurs at home. But it's it's Slavia, but it's also the Spurs. So, नहीं. कुछ भी हो सकता है, bro. It's 16th versus 31st. All मजाक, but complete seriousness में Spurs easy victory. Easy victory. ये 4-5 गोल वाली मैं कह रहा हूँ. अच्छा, मैं कह रहा हूँ. मुझे लग रहा है 2-0. नहीं, मैं गोल नहीं मारते बेचारे घर पे यार. तो यही तो फ्लड गेट्स खुलेंगे, ब्रो. मैं बता रहा हूँ.
मजा ही आ जाए फिर हाँ, किसको? मुझे तो नहीं आएगा। उनको उनको उन्हें तो दानियाल को मजा आएगा और जो बाकी नॉर्थ लंदन में एक्टिव सपोर्टर्स हैं उनको मजा आएगा। I think 4-5 nil. या What do you say? यार आई थिंक 2-3 nil। Yeah, आई डोंट थिंक मतलब, 4-5 नहीं 2-3। As in they're not conceding and they're scoring goals. या आई डोंट थिंक दे विल कंसीड। हाँ। आई डोंट थिंक सो। फिर लास्ट जो हमने कवर करना है दैट्स बायर्न लेवरकूजन वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड। ये मजे का मैच। हाँ। मैं बता रहा हूँ, this is going to be entertaining. This will be good. Yeah. I think Leverkusen, they beat City last match and Newcastle lost to Marseille. Yeah. But having said that, they have been unbeaten in the last 3 games, Newcastle. They've been in a very good run of form. ठीक है, वो स्पर्स के खिलाफ उन्होंने लास्ट मिनट वो गोल मार दिया था और वो रिकवरी हो गई थी, ड्रॉ हो गया था, बट आई जस्ट थिंक ऑन पेपर इवन लाइक न्यूकासल इज फार सुपीरियर. Leverkusen has been in a shit run of form. Yeah. They lost to Dortmund in the cup, Yeah. then they lost to Dortmund in the league. League. Yeah, and then they lost to Augsburg, who are like struggling real bad. They lost even 7-2 to PSG. So I Yeah. don't think so. And सिर्फ जो न्यूकासल का है मुझे जो फील आ रही है But by the way, they didn't lose to Dortmund in the cup. They beat Dortmund in the cup. they beat Dortmund in the cup. They beat Dortmund in the cup. Are you sure? Yeah. खोला अच्छा, हुआ लेकिन था। but they lost to them in the league. हाँ, lost to them. अच्छा, sorry. Yeah. Beat, loss. Yeah. I don't think anything's gonna happen. Loss, beat loss. That's how the Ah. form is. I don't think. I'm not too sure. I think this is going to be a draw. You think this is gonna be a draw? This is going to be a draw. Yeah. I think Newcastle will probably have, unless Newcastle play their first, I think they're going to be squad rotations. Do you think Harvey Barnes starts? Yeah, I think he will. I think in this particular match he might start, but I think even Wissa is coming back into the Yeah, squad. Wissa is so back, yes, this is a good match for him to like get in, Yeah. bring him on. Obviously, I don't think he might not start because of but- match fitness nahi hai. हाँ, लेकिन But maybe it might be good time some to minutes, bring him yes. in. Yeah, because then everyone plays on the weekend again. So it's going to be a good match. Newcastle, जीत रही है. हाँ, Newcastle जीत रही है. I think this is going to be a high-scoring draw. 2-2. High scoring draw. 2-2. No, I think it's going to be like a 3-1 Newcastle. Yeah, 2-3-1 Newcastle. I don't think Pope out है तो I think Ramsdale आएगा तो फिर कुछ पता नहीं है. नहीं, फिर तो concede करेगी ना. फिर तो कुछ पता नहीं है क्या होता है. Newcastle हाँ, concede फिर तो करेगी. कुछ पता नहीं है क्या होता है. Yeah. लेकिन I still think Mhm. easy Newcastle. चलो. हाँ. Anything else to add, Chips? नहीं, बस यही है. बस like I said, this week is a very like पता नहीं है क्या होगा क्योंकि it's very different teams are लेकिन playing मैं different बता रहा matches. हूँ, मजा आएगा. मजा तो आएगा. हाई स्कोरिंग गेम्स होती Yeah. हैं. So let's see. Even we predicted quite high scoring. हाँ. So it's been a first. So let's see. Yeah. Let's see हाँ, क्या कोई होता है. 1-0 शन-nils नहीं. नहीं, तो 1 nil-nil nils इन जो हमने मैचेस कवर किए हैं 1 nils 2-2, मुश्किल है. 5-0, 4-0. 3-4. और फिर आपसे अब प्रीमियर लीग का जो है राउंड अप उसके लिए मिलेंगे. या डेफिनेटली. इसमें एफपीएल टिप्स नहीं थी तो क्या दें. पसंद आई वो वीडियो तो लाइक बटन पे क्लिक दें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. जिबी, मुझे, जैद, नोमी, दुनिया के सारे बंदों काशी को बना बोलना. काशी लाजमी सबको हर जगह फॉलो कर दें. उसके अलावा हमें स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, iHeart रेडियो, पैंडोरा और जहाँ जहाँ हैं हम वहाँ पे जाके हमें सुन सकते हैं. विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.